करती है वो, समझ रहे? ट्रेन के गाने गाने में चल रहा है। इसलिए मेरे को देखना ही पड़ता। क्या कुछ तो हो रहा है भाई, 2 मिनट दो। यस, वेलकम टू द न्यू स्ट्रीम गाइस। आज हम खेलेंगे जादुई दुनिया, ठीक है? आज हम खेल रहे हैं जादुई दुनिया, और मुझे नहीं पता मैं क्यों खेल रहा हूँ, और गेम की वॉइस क्यों नहीं आ रही है। रुको, मेरे को पता है क्यों। क्योंकि पिछली बार खेल रहा था वॉइस बंद करके, कोई जज नहीं करेगा अब। Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? भाई देखा देखा, इस गेम का वॉइस इतना शार्प है, इतना तेज चलाती है पाइमोन की, समझ रहे हो? मैं कम करके रखता हूँ। ये है गाइस फेवरेट कैरेक्टर ये। मुझे पता नहीं मैं क्यों नहीं खेल रहा था। हाँ, मिस्टर प्रो बॉय, वेलकम टू द स्ट्रीम। आज हम खेल रहे हैं जादुई दुनिया। आज हम कोई ऐसा भूत वाली दुनिया नहीं खेलेंगे, हम कोई भूत नहीं पकड़ेंगे। हम सोच रहे थे थोड़ा चिल करने का, और चिल करने के लिए अगर तुम्हें कुछ खेलना है तो आई थिंक जेंशन इम्पैक्ट इज़ वन ऑफ दोज गेम्स। बस स्टिल मैं चिल नहीं होता हूँ इस गेम में। मैं कॉम्पिटेटिव घुस लेता हूँ तो मैं चिल नहीं करता था। बस बार सोच रहा हूँ खुद के लिए खेलने के लिए, तो यस, विल ट्राई माय बेस्ट। वाई दिस गेम लिटिल बिट लैगी।
रेडी? दिस गेम इज लिटिल लैगी फॉर मी। शायद बड़े टाइम बाद खुला इसलिए, और एक और चीज़ कल अपडेट आने वाला है तो सर्वर्स की वजह से। प्री इंस्टॉलेशन किया नहीं है मैंने। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो बस सर्वर से शायद सर्वर। गैस तुम्हें भी फील हो रहा है क्या लिटिल लैगी करके? मैंने बहुत दिन बाद खोला है गैस, थोड़ा सा समझ रहे हो, इसलिए थोड़ा लैग कर रही है। रेडी का कहना है ऐसा। थोड़ा ग्राफिक देख लेते हैं क्या सीन है, थोड़ा मीडियम कर लेते हैं। समझ रहे हो, स्ट्रीम की वजह से हो सकता होगा। अब नहीं होना चाहिए लैग। नहीं अब लैग नहीं है। यस नाउ दिस इज गुड। We're way behind. एक टाइम पे आई वाज लाइक गाइस कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट गेम, बस अभी पता नहीं क्या हो गया था मुझे, शायद सो रहा था मैं, किसी ने कुछ नहीं देखा। माय एम इज नॉट गुड। अब जल्दी कमीशन बता देते हैं, सालों बाद कमीशन करेंगे, कैथरीन से मिलेंगे हम। Healthy body, healthy mind. कैथरीन को मिले हुए ज़माने हो गए यार। जिसको नहीं पता है, मैंने आज पोस्ट डाला है यार इंस्टाग्राम पे, जाओ फॉलो करो यार। देखो यार लाइक वाइक मारो, तुम्हारे भाई का शक्ल आया है वहाँ पे आज। फेस रिवील करते हो, मास्क के साथ फेस रिवील किया हमने, देखो। हाँ जाना बताओ भाई, इतने सारे गाने बजते हैं भाई। रेडी अब मेरे को याद आ गया, मैंने गेम क्यों छोड़ी थी। क्यों? बहुत जाना गाना बजता है। मैंने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि किसी ने गानी निकाल ली थी। अच्छा चलता है। हाय भाई, हाय शांश, हाउ यू डूइंग ब्रदर? और कैसा है दोस्त? कल तेरा डेटा खत्म हो गया था ना? आई होप आज होगा। हम यहाँ पे क्यों आए? What? हम यहाँ पे क्यों आए गाइस? आई हैव नो आइडिया। मस्त ब्रो, अरे चिल एकदम मस्त। सिविल के वाला कर भाई, कुछ नहीं रखा है उसके अलावा। हाँ भाई कैसे हो? बढ़िया ब्रो, व्हाट अबाउट यू बनीवेल? कैसा है ब्रदर? हाउ यू डूइंग माय फ्रेंड? Stabilize. Order guide you. There is no escape. Come back, more enemies incoming. Yes, I knew it. This is order. फैज़मोफोबिया यार ब्रो, कभी कभी दूसरी गेम्स भी एंजॉय करा करो, ऐसा मत करो यार। आई नो तुम लोग बहुत सपोर्ट हो, लेकिन कभी कभी किया करो, मजा आएगा। हेलो मित्रों, अरे अरे देर हो गई। Access denied. कभी कभी दूसरी चीज़ें भी अच्छी होती हैं गई, रेस्ट लेना चाहिए हमें हर गेम से थोड़ा थोड़ा करके। Next on the बहुत agenda. ज़्यादा फैज़मो हो रहा था, समझ रहे हो? फिर यार वो एक टाइम पे ना आके बोर होने लगेगा मेरे लिए, समझ रहे हो? तुम चाहते हो क्या मैं बोर होके खेलूं? यो व्हाट्सअप कोयल, तुम चाहते हो क्या मैं बोर होके खेलूं? तुम लोग को बात बताओ, तुम लोग नहीं चाहते हो ना मैं एंजॉय करूं, यही चाहते हो ना थोड़ा। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग मेरे सपोर्टिव हो, ऐसा नहीं करो यार मेरे लिए, समझो चिल करते हुए खेलना चाहिए।
हमेशा फेज़्मोफोबिया अच्छा नहीं है ब्रो। मैं तो सब गेम देखता हूँ। ये होती है ना स्पिरिट यार। तुमने देखा था क्या मेरे को कभी गेंशिन खेलते हुए? नहीं देखा ना। नहीं होता है रे ब्रो। अरे होता है ब्रो, मैं बताता हूँ अगर मैं दिन में वैलो खेलूंगा ना मैं बोर हो जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा उस गेम से। मैं थकना नहीं चाहता हूँ। फैज़्मो इज लाइक गुड गेम, उसको मैं अपने लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। क्यों है टेडी, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तेरी वॉइस कम क्यों है? और अब बोलो कुछ। तेरे को आप बोल। भाई देखा, अब टेडी की आवाज आ जाएगी। सेम हुआ था देखो, टेडी की वॉइस भी बहुत ज्यादा आई थी दिन में, इसलिए कम कर दी, बोर हो गया था मैं। यो स्टोरी में कुलदीप रिएक्शन नहीं भाई, दूंगा। यो कुलदीप भाई, व्हाट द, क्या बोल रहा साली? कैसा भाई? यार तुम जो कुछ भी नहीं गेम बोल खेलो रहा हूँ। मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज तुम बहुत एंटरटेनिंग हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अरे ये होती है ना बात, देखो कल्याण ये सच्चाई थी। ऐसी सच्चाई सुनने में अच्छा लगता है। We're way behind schedule. कल्याण हमें तोड़ना है ये। खत्म भाई का मिशन, चलो गए चलो। वैसे तबीयत कैसे है अब? थोड़ा बेटर है पहले से। ये करना है, नेविगेट कर उसको। पहले से लिटरली काफी बेटर है अब। हल्का बहुत खांसी है बस। एंड एक चीज बोलूं यार, रिलैक्स करने के लिए गेंशिन इज बेस्ट। The air is just right. Next on the agenda. आई लाइक सीइंग न्यू गेम्स वीडियो। थोड़ा आइडिया दे दो, ये गेम्स है क्या, मेरे भी खेलना है। ओके मेरे से अच्छा ये गेम टेडी जानता है, मैं टेडी को बोलूँगा। ये लो हो टेडी लिया। टेडी बताओ भाई इस गेम के बारे में। बताओ भाई। एक ये एक एनिमो आरपीजी गेम है, ठीक है। और आई मीन जैसे एक स्टोरी मोड होता है, एक कंसेप्ट लेके चलती है गेम, वैसे गेंशिन एक कंसेप्ट लेके चलती है साथ में स्टोरी का, बट एज साइड में तुम साथ में मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। इसका साइड कंटेंट ये है, तुम कलेक्ट करो कैरेक्टर्स, बिल्ड करो और दोस्तों में आपस में दिखाओ एंड ऑल। और भी मल्टीप्लेयर में काफ़ी कुछ करने को है, लेकिन साइड इसका जो मेन कंटेंट है, मेन कंसेप्ट है, वो है इसका स्टोरी मोड, जो कि काफ़ी अच्छा है। यू विल लविंग इट। समझ रहे हो गाइस? अगर तुमने चालू किया और अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ये सब में आई तो सी यू आर तुमने आल्सो full ट्रैवलर। यस ब्रो, मी आल्सो ट्रैवलर, यस। यस बट मी गुड कैरेक्टर्स वाला कैरेक्टर्स, यस ट्रैवलर, यस। अरे यार तुम तो फिनिक्स की जनता हो ना, फिनिक्स तो बहुत देखता था ना, खेलता था जीने अपना जेंशन इम्पैक्ट। क्या बात कर रहे हो, तुमको जेंशन इम्पैक्ट नहीं पता? थोड़ा तो हाई एक्सपेक्टेशंस थी यार, क्या कर रहे हो यार? और इवन जो भी लोग गेम जो अभी पास्ट में मतलब बंद हुई है, मतलब खेले हुए हैं जो जो पास्ट में, और वो बैन हो गई या कुछ भी हुआ है उनके साथ, या जिनकी भी मेन जो गेम थी वो उड़ गई है, वो सब गेंशिन में मोस्टली स्विच हो गए हैं। मतलब काफी लोगों के पास आया। और भी गेंशिन में ऐसा कोई नहीं है वो, आई मीन Thank you for completing today's हाँ commissions. कॉम्पिटिटिव नहीं है, Here is your कॉम्पिटिटिव reward. नहीं है, बट यू कैन से सब अपने माइंड मतलब पीस, तुम एक अलग ही पीस फील करोगे इसमें। मेन रीजन खेलने का वही है क्योंकि पीस ही है सबको। हाँ, और तुम्हें इसमें कुछ अचीव करोगे, तुम जो भी तुम अचीव करोगे, जो भी कैरेक्टर्स एंड वेपन एंड ऑल, जो भी तुम्हारी अचीवमेंट्स होगी, जो भी तुम निकालोगे, वो तुम उस पर खुश ओह, होगे। ऐसा क्या क्रूजर भाई? ये लेट ऑडियंस वाला है क्या? क्या यार, वही ना, मैं तो बोला यार फिनिक्स की जनता है तो सब पता होगा यार। क्या यार, चलो अब यहाँ पे चलता है, फैज़्मो की लाइव करना है। हम हैं? क्या? कौन आया ये? कहाँ है आवाज? आवाज आया ना किसी का, और का था शायद। रुक। हाँ यहाँ अच्छा। कैसे? कैसा है ये? अच्छा इसके क्रिएटर का हुआ है अच्छा बोले। क्रिएटर। भाई एक बात बता दूँ, एक से वो पूछ क्या ना भाई, ऐसा ऐसा समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा हाँ। ऐसा तेरे थोड़ा पास थोड़ा भाई rules है भाई। एक्सेस है, मतलब हाँ तेरे पास एक्सेस है, मतलब
हाँ अगर कोई है क्या यार। क्रिएटर कोई भी है, मैं एक थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे ऐसा होता है कि जो लाइव कर रहे हो उसके साथ अगर वीसी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम नहीं थे पहले से एक बार चैट में आके पूछ लो, ऐसा वाला सीन है। डीएक्सी है 800 सब्सक्राइबर हूँ बस। अरे 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 लेट होता है यार, तब भी काफ़ी लेट होता है। 800 सब्सक्राइबर मतलब समझ लो उस बंदे ने कम से कम 2-2.5 लगा दिए होंगे यार, मेरे को तो लगता है। मेरे को तो लगता है भाई जेंशन खेलते खेलते भी ऑडियंस बिल्ड करना टफ था। इंडिया में कम्युनिटी है लेकिन उतनी खास लगती नहीं मेरे को। ये बहुत बड़ी है। खास बोल रहा हूँ मैं। खास भी है पता नहीं, Should आई we मीन तुमने really be एक्सप्लेन नहीं awkward? किया होगा। आर्कोन कुछ देखते हैं गाइस, जहाँ थोड़ी सी वही वाली कर लेते हैं। कुछ तो करेंगे क्योंकि मैं कम से कम महीनों बाद आ रहा हूँ जेंशन इम्पैक्ट में। और मेरे को अगर लत लग गई इस गेम की तुमको फिर जेंशन ही दिखेगा फिर, मैं इतना भी बता सकता हूँ। इतना एडिक्टिंग गेम है ये। बिटवीन हम विश कर सकते हैं क्या? विश करें क्या? हम लोग को विश दिखाऊंगा। विश का थीम कैसा है? अरे सो के उठ रहे भाई ये लोग। We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! We should go meet Dunya's right away! ब्लीस करेगा? ब्लीस क्या होता है? ब्लीस क्या होता है? डार्क शॉप हम ए रेडी हाँ चली गई। हैं? क्या नाम था उसका? वो उसके Yes. साथ कौन थी वो? नाम भूल गया। ये को चली गई। अरे यार विश कर रहा था मैं उसको। 800 उसने ये गेम 500 से छोड़ दी थी, मैं उसको 100-150 सबसे जानता। लिटरली 1 ईयर होने वाला है और बहुत जल्दी ग्रो कर लिया यार। वही बहुत लेट है, जब उसकी सब्सक्राइबर बढ़ने लगे तब से हूँ। अरे नशा कर लो जेंशन का। यस ब्रो ब्लिज़र्ड करेगा। ब्लिज़र्ड क्या होता है बे? भाई वो मैं तो डोमेन बता है। रहा हूँ, ऐसा मत करो यार। कर लूँगा डोमेन, कोई इशू नहीं है, आ जाओ। मिको एंड, हाँ मिको एंड हो गई यार। वही ना, मैं कल विश कर रहा था उसमें, मेरे पास अभी थोड़ी बहुत विशेस भी पड़ी हैं। कर लूँगा यार, जिसको डोमेन साथ में करना कर लो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो ई बोल रहा हूँ। एलिमेंटल साइड किससे आता था यार? मिडिल क्लिक हाँ मिडिल क्लिक से आता था। पॉइंट मतलब जाना कहाँ है मेरे को? भाई साहब यहाँ जाना है। ले जा सकता मैं वही वाली टीम। तू न्यू है? अरे मैं न्यू नहीं हूँ, मेरे पास ये कैरेक्टर्स कहाँ से होते हैं? मैं महीनों बाद आया हूँ यार। मैं न्यू पुराना हूँ। जस्ट कि मैं पूरा इवेंट वापस एक्सप्लोर करूंगा प्रॉपर, क्योंकि मैं जो इवेंट्स अभी आए हैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। Not भाई at all. You seem kinda tired. I'm doing अकाउंट खरीद well. के डायरेक्ट आ There's no जाते हैं need to हम वही लोग। ना यार, अकाउंट खरीद के Shall आया हूँ we ना मैं go? तो डायरेक्ट। क्या बात कर रहा Let's start with this. Sure. हूँ? जस्ट कि महीनों बाद आया हूँ वापस जेंशन में, तो मेरे को नॉलेज उतना ज़्यादा खास नहीं है। दिस आर्टिफैक्ट ओ ऐसा क्या? फॉलो डंजन यार, करते रहे फॉलो। Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. अरे वॉक स्टाइल कैसे बदलता था? कंट्रोल नहीं हो रहा। हो गया। सही होना चाहिए। अच्छा हम स्टोरी और मल्टीप्लेयर दोनों है? हाँ इसमें स्टोरी और मल्टीप्लेयर दोनों है ब्रो। हाँ हेलो लेकिन हेलो तुम डेरेक, स्टोरी वेलकम को टू स्ट्रीम बडी। This is a stall स्टोरी को offering foods मल्टीप्लेयर to में a नहीं कर Haft सकते Mewa enjoy। feast. हाँ ये भी है, आई थिंक वो You're बेटर है quite हमारे लिए। well informed, miss. I thought most people nowadays हेलो wouldn't डेरेक, वेलकम know. टू स्ट्रीम बडी। हम खेल रहे हैं जेंशन, होप यू लाइक द कंटेंट। They're all plants. Oh, Paimon, actually, what is the Haft Mewa feast you mentioned just now? It's one of the Sub-Zerus festival's traditions. People used to set their tables with 7 यार different कितना है? foods to 55 symbolize या the वर्जन 7 रुक जा virtues अभी। of the Dendro Archon. Appear to be in the form of the moon. वर्ल्ड ज्वाइन करने के लिए रुक जाओ यार, अभी रुको, स्टोरी कर रहा हूँ मैं अभी तो। मल्टीप्लेयर वाला कोई सीन नहीं है। Kind of food. 5-10 मिनट रुको, 5-10 मिनट रुको, मेरे को फील में आ जाने दो जेंशन की थोड़ा, समझ रहे हो? The moon signifies. कर लो, कोई इशू नहीं है। It's escaping me for now. यार 55 है यार Wait a गुजर moment. भाई, ज़्यादा नहीं खेलता हूँ मैं।
really looking it up in a book? Oh, right. It means illusions ये and क्वेस्ट lies. सच में अच्छा था। हाँ यार मैं अभी कर But रहा हूँ if यार, you मैं trust बहुत your लेट चल रहा हूँ, intuition सॉरी and यार। overcome your fears, आई the होप sun will तुम्हें surely वापस सब rise. याद आ जाएगा मैं करते हुए। Understood. I'll keep that in mind. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू Oh, से। it's nothing. तुमको शायद सब याद just रहेगा कि learning as हाँ I ऐसा भी go. हुआ था, तो तुम लोग शायद एक्सपीरियंस कर सकते हो वापस। जो तुम्हें एक बहुत ओपी ओपी ग्राफिक्स लग रहे थे उस टाइम पे कि भाई एनिमेशन बहुत प्यारी हैं, तुम वापस हाउ मेनी अकाउंट्स। एक ही है यार, क्या बात कर Guess रहे हो that यार was गुजर still मियाँ, pretty interesting. एक ही है, एक ही पे Okay, कूट कूट on के to पैसा next डाला है stop. हमने। सॉरी भैया, अरे सॉरी, अरे कोई इशू नहीं यार थॉर, ये जिसकी थोड़े बहुत रूल्स हैं हम तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर देंगे, क्रिएटर्स को भी फॉलो करने पड़ते हैं वो रूल्स। Where to next? और तुमको अगर मेरे कैरेक्टर्स वगैरह देखने हो तो बता ना, मैं शोकेस कर सकता हूँ, तो खास बिल्डअप नहीं है लेकिन ठीक है। कितना खर्चा किया? खर्चा मेरा 1.5 के ऊपर हो चुका है। 1.5 मतलब 1,500 नहीं, 1.5 लाख के ऊपर हो चुका है। I have 2 accounts F2P between। और यार All फ्री right, टू प्ले, soldiers. नाइस यार। मैं Now फ्री टू that प्ले you नहीं हो have गई, your मैं फ्री टू प्ले नहीं हो गई। Yalda candies, don't forget your loyalty to Meh. Lesser Lord क्या? Kusanali. Dismissed. क्या? मैं फ्री टू प्ले हूँ, क्या बात कर रहा है? मैं है फ्री टू हाँ प्ले। टेडी है फ्री टू प्ले, सही बात है, What's बहुत to सही बात है। learn? Is this a play? काम ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? वो नहीं ऐसे Fierce, बोला the मैं Night तो, of Flowers. मेरा भी दो। Is अरे another नहीं यार मेरे पास 2 नहीं Sabzeruz है यार, festival icon. ऑन कर यार पूरी स्टोरी वापस। It's all thanks to Miss Dunyazad's sponsorship that the children can meet the Night of Flowers. Oh, do you want some Yalda candies? I happen to have some boxes. What's to pick? Don't It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. तुम लोग 2 कौन से खेल Flavors लेते हो यार? include lavender melon, hara fruit, sunsetia, Ooh, how interesting. and there's also lizard tail and oni kabuto. कल्याण Why do those flavors even exist? Traveler, help Paimon pick one. Paimon wants to eat the are you here? Are sunset. you Right. close? These boxes of candy are numbered 1 to 5. भाई सोचो from इसको left जो to नहीं right. पसंद है वो कैंडी Which one उठाई do तो you कितना चिल्लाएगी है। भाई कौन सा उठाना है? नहीं, पहला वाला उठाओ, खलब करो। गॉड डैम 150 के सही है। हाँ ब्रो, हाँ सही है, मैं तुम्हें शोकेस भी कर सकता हूँ एंड थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, समझ लो। Ah, इट जस्ट की excellently लूज भी chosen. बहुत किया है और Number समझ लो 4 is आया भी indeed बहुत है। Sunsetia. वीसी आ सकता हूँ? वीसी अभी क्या करोगे यार? अभी Bet you मतलब had incredible कुछ luck, काम था क्या? and Paimon was right. खेलना है साथ में बात अलग है, लेकिन अभी मैं स्टोरी कर रहा है। डार्क शॉ पहले बनाई थी मजे के लिए, अब बहुत पेन है, वही ना, समझ गया मैं। Are you saying that you instinctively chose the right box? दिखाओ दिखाओ, 2 मिनट दो बस, ये खत्म That होता है मैं दिखाता हूँ। maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. ये देर से ज्यादा ही लग गया होगा ना वैसे तो। लग गया होगा। हाँ You're just gonna walk off like that? दिखा रहा हूँ, तो जाने दो। हाँ लो भाई, ये कैरेक्टर्स है मेरे। 2 मिनट रुको, मैं बिल्ड नहीं किया हूँ, पहले हंसना नहीं, ठीक है भाई धैर्य भाई, ऐसा कोई बिल्ड नहीं किया मैंने, हंसना नहीं, ठीक है? कुछ भी बिल्ड नहीं है, सिर्फ कैरेक्टर निकाल के छोड़ देता था मैं दोस्त लोग हेल्प करते थे फिर। ठीक है खेल। हाँ देखो, गान्यू है, ठीक है, रेडन है, जोंगली है, योइमिया है, कितने कॉन्स्टलेशन है वो सब बाद में दिखाता हूँ, अभी बस ये देख लो। जीन है, ठीक, ये तो अब तुम लोग देख ही लोगे, ठीक है? तुम अपना अकाउंट देखो, हम अपने अकाउंट दिखाएंगे। अभी नहीं यार, हम देखेंगे वो शो। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग वो शोकेस कराते हैं ना, ये लोग शोकेस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बस अभी के लिए के नाम पे अकाउंट रिव्यू के नाम पे Flex. शोकेस का। हाँ, बस अभी नहीं करेंगे। कामी सातो आया का आई नो, तुम लोग सब जानते हो इसको। चीची वर्स्ट केस सिनेरियो जानते होगे इसको। ये कोकोमी, मैं इसका नाम भूल गया हूँ, ये अभी आया था एक दिन, 10 विश करिए निकल गया साइनो। एंड वेपन, अगर तुम लोग बोलोगे वेपन कहाँ से उठता था यार,
बैग से। बैग वेपन ये है मेरे 5 है, लेकिन मैंने बहुत रोया हूँ उन सब के लिए। क्यों रोया हूँ? क्योंकि कुछ कुछ रिफाइनमेंट रैंक 2 वाले भी हैं, वो तो होता रहता है, हाँ ना। एमोस बो इसके लिए भी बहुत रोया था मैं। थंडरिंग पल्स के लिए भी बहुत रोया हूँ मैं। ये तो पता नहीं निकल गया था गलती से। बाकी ये भी इसके लिए तो भाई मैंने क्या रोया हूँ टेडी। क्यों गलती? क्या मून ग्लो क्या तुक्के में निकला था भाई, और चाहिए नहीं था मुझे। मेरे साथ बहुत खड़े लाइन पे काम हुआ था वो। सॉरी लॉल R2 वॉर्टेक्स। हाँ यार, एमोस बो निकालने के लिए एमोस बो के साथ आया था ना वॉर्टेक्स एंकुशर। और दिखाता हूँ तो मैं। आप कॉन्स्टलेशन देखो इसकी, गानियों की कॉन्स्टलेशन देखो। ये C1 रेडिन C1, जोंगली योइमिया 3 C1। बेकार जोंगली के लिए बेकार है वैसे वॉर्टेक्स। अरे मैं शील्डर बनाया ना, शील्डर ब्रो शील्डर। डिल्यूक C3 बकवास। वन है C6 है यार ये। कॉन्स्टलेशन कुछ ऐसी हैं भाई, देख लो। मैं जल्दी शोकेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को गेम खेलना है। रेजर C4 है भाई, सही है। आई थिंक सबसे पहले रेजर निकला था मेरा अपने कम्युनिटी में। यही सब है थोड़ा बहुत। T2 कर लेना, रेडन रीरन आने वाला है सून। हाँ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बस एक किडनी बेचना पड़ेगी क्योंकि हमसे ग्राइंड नहीं होता है। ग्राइंड वाला बंदा नहीं हो यार मैं। कर सकता हूँ ग्राइंड, लेकिन अभी यार समझ लो टाइम भी नहीं मिलता है, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ साथ में, तो यार टफ है यार साथ में, सब कुछ टफ है। तब तक यार स्ट्रीम पे जो लोग नए आए हो क्या कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब कर दो ना यार गाइस। अच्छा लगता है तुम्हारे भाई को, तुम लोग करो ना यार, कर दो ना यार। बुलवाना पड़ता है तुम लोग, क्या है यार ये सब। फीलिंग ऑफ डेजा वू। क्यों गेम खेलो इवेंट से ही मिल जाएगा। अरे ब्रो वो चीज़ तुम लोगों के लिए मैं समझ रहा हूँ, तुम लोग खेलते हो इवेंट करते हो निकाल देते हो, वो कर लेते हो तुम लोग यार, सही है। लेकिन मैं मन नहीं करता है, मैं बहुत आलसी बन रहा हूँ। And I really respect F2P players। टाइम तो हम पे भी नहीं है। अरे यार मैं कैसे समझाऊँ यार, देखो मैं बताता हूँ। कॉलेज है, बिजनेस है मेरा, फिर उसके बाद जिम है, फिर आके मीटिंग्स होती हैं, फिर क्लासेस रहती हैं, उसके बाद भी स्ट्रीमिंग का टाइम निकाल के मैं बैठा हूँ अभी। फिर इसके बाद मैं अपने जो भी दोस्त रहेंगे उनसे बात करूँगा मेरी वीडियोस के लिए, समझ रहे हो। नहीं निकलता यार टाइम, अभी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, दिक्कत चलता है बीच बीच में दिक्कत चलता है। और तुम अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे असाइनमेंट्स कितने होते हैं। मैं तो मेरी जन्म के पहले से तुमको सब्सक्राइब और लाइक करके बैठी हूँ। अरे ओपी भाई, गलत बोला, हार्ड बोल दिया भाई बहुत। ये पाइमोन को खाना दे दो, मैं स्टार्टिंग से बैठा हूँ इस मतलब, समझ रहे हो। हाँ मैंने भी 60K जैसे स्पेंड किया है F2P, तो मैं भी नहीं हूँ। अरे वही ना भाई। एक चीज़ बोलूँ, मेरा POV है, मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हारे लिए कि नहीं, मैंने रिग्रेट किया है भाई। मैं खेलता नहीं हूँ इसलिए मैं रिग्रेट किया हूँ। अगर मैं रेगुलर खेलता तो मेरे लिए रिग्रेट नहीं होता, लेकिन मैं खेलता ही नहीं होता, रिग्रेट है भाई मेरे लिए डेढ़ डालना, समझ रहे हो। मैं किसी को बोलना सिर्फ टेडी जानता है, मैं रिग्रेट तो करता हूँ भाई। भाई कोयल जहर वहर बोलती है बीच बीच में भाई। Gets the impression that we've been here many times, even though we aren't regulars. वैसे कल बैंक रॉबरी की बात हुई थी, उसका क्या सीन है? करते हैं यार, How about we go out करते हैं, again पक्का and करेंगे, try मैं बता रहा something हूँ। else? 2 साल से डेली खेल रहा तो मेरे को तो वर्थ इट लगता है। अरे वर्थ इट है तेरे लिए, क्योंकि तू 2 साल से रेगुलर खेल रहा है। मैं क्या करता हूँ, आता हूँ, विश करता हूँ, चले जाता हूँ। मैं सिर्फ वो हूँ यार, विश वाला सीन है मेरे साथ बहुत।
विश के लिए खेलता हूँ मैं। तो मेरे को बस पुलिंग पसंद है इस गेम की। गाचा गाचा गेम है ना, तो गाचा वाला सीन पूरा पसंद है मेरे को। मेरे अल्ट से स्पेंड करता रहे, रिग्रेट करता हूँ मैं। अल्टरनेट में क्या स्पेंड क्यों करने का ब्रो? अल्टरनेट में स्पेंड करने का मतलब ही नहीं निकलता यार। मेन में करो भाई, मेन में तुमने टाइम दिया है। Hey, Dunyarzad is sitting by yourself on that bench over there. आई होप तुम लोग समझ रहे होगे गेम क्यों इतना चिलिंग है एंड रिलैक्सिंग है, क्योंकि पाइमॉन है इसमें। टैंगलवुड बैंक या सनी मेडोज बैंक? सनी मेडोज बैंक, बड़ा वाला बैंक मारेंगे। Dunyarzad. टैंगलवुड बैंक छोटा है यार। Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to सनी my मेडोज का rescue. मारो। I started to अरे feel मालूम unwell कोई after कल मैं that, फैन में so खेल I रहा sat था, down here. उसमें मेरे को लगा हांटू है। उस बाद में पूरा आधे घंटे की पंचायत के बाद जिन निकला वो सनी मेडोज में। और ईएमएफ 5 भी नहीं दे रहा था। पाइमॉन अनोइंग है, मेरे को बहुत क्यूट लगती है यार। क्या बात कर रहा है Oh क्यूदेमिया? my goodness, are you hurt? क्यूट है यार, ऐसा मत बोलो यार। दोनों में टाइम दिया है, बिकॉज जो मैंने मेन में नहीं मिलता वो अल्ट में ले लेता हूँ। पैसा ही पैसा होगा। I'm okay. वही ना यार, पैसा ही His तो arm होगा। got scratched, एंड डैथ भाई but ऐसा है it कि isn't serious. करे यार, मेन में करो यार। क्या कर रहे हो यार, खिलवाड़ कर रहे हो यार। क्या है यार सब? व्हाट इज बिहेवियर ब्रो? गाचा एडिक्शन तो है, गाचा एडिक्शन ही है ब्रो। You seem a स्टोरी little एडिक्शन तो ऐसा है कि भाई एनीमे आएगा तब देख It's the लेंगे। Sub-Zero's Lol. festival, and you've been looking forward to it so much. Not at all. I've always been like this. Excessive physical exertion or strong emotions tend to aggravate my illness. अनुज बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फैज़मो में गोश्त ठीक गैस करना। Besides, no ईएमएफ matter how लेवल 5 amazing आना the चाहिए day था, may be, 4 में अटक जाता It है is वो। but a single day. After however many more days, my time will come to an end. एक सेकंड गाइस, मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज आया था किसी इंस्टीट्यूट से। एक सेकंड बस। चलो गाइस, एक इंटर्नशिप मिल गई है। यस, बड़ा मोटा पकड़ा आया है अपने हाथ में। हाय भैया, कैसे हो आप? शुभदीप सिंह यार, लॉन्ग टाइम नो सी ब्रदर। कहाँ थे? गायब हो गए यार, तुम तो आ ही नहीं रहते यार। And Paimon feels like something's आते ही really नहीं got थे। you 15 के down ऊपर right 5 now. स्टार्स है मेन पे। भाई मैं तो 11 ही 12 हैं यार। क्या बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा होता है। अब से हो जाता है 36 को मज़ा ख़त्म हो चुका है गेम का। मतलब It really is fine. I don't अब mind. 20 हो जाता है 3600। ओह 36 स्टार हो गए क्या तेरे? 30 सही भाई। Did something happen? अकबर वेलकम कर दो, एक बार वेलकम कर दो। वेलकम यार शुभदीप सिंह, वेलकम टू स्ट्रीम बड़ी। Dunyarzad, एंड आई नो तू 5 मिनट बाद मेरे को बोलेगा शाउट आउट भी दे दो। deja vu? मेरे को You पता है, know, आई like रिमेम्बर when ब्रो, you've already आई रिमेम्बर यू। experienced something मैंने that's तेरे लिए happening स्ट्रीम right now? बंद कर दी थी, फिर चालू करके मैंने तेरे को शाउट आउट दिया था। आई रिमेम्बर। सॉरी भैया, एग्जाम था। अरे कोई Deja बात vu? नहीं यार, तेरा ही चैनल है यार, एंजॉय कर। But my days have been the same for years now. एंजॉय करने का ब्रदर, सॉरी Even वॉरी if I वाली were बात नहीं है feeling भाई deja अपन। vu, I suppose I would already be used to it. Oh, Paimon sees. Then, is it only the two of us? गोली almost बेटा, time. मस्ती नहीं, समझ रहे हो कोयल? तुम्हें बोला है ये चीज। Huh? ईएमएफ लेवल 5 आता है भाई उसमें, दिन में 4 आके शांत हो जा रहा है। गिल से मार दी गेम हमारे लिए। Sub-Zeros is about to begin. अरे अकबर नहीं, Let's एक go. बार बोलना चाह रहा था वो, समझ गया हूँ मैं। मनीवेल भाई समझ गया मैं उसको, एक बार बोलना चाह रहा था वो। कोई बात नहीं। माई चड्डी बड्डी, आई एम अ बिग फैन, वन सेल्फी प्लीज। आ रहा हूँ मैं कोलकाता, रुक आता हूँ करता हूँ बात फिर। With your lack of intellectual Yo, big credentials, graphic I do video. not believe you are qualified अरे to हाँ debate यार, with अच्छी me. ग्राफिक्स हैं गेम पे। What you should be doing is अरे finding रैंडम टीम से भी workers to 36 कर tear देता हूँ। down अभी this तो कुछ बाकी नहीं है ridiculous गेम में eyesore. करने के लिए। बस आर्टिफैक्ट्स ग्राइंड करता हूँ, डेली करता हूँ और लॉग आउट। अरे मेरा अकाउंट ले ले। When we return, have the कर दे भाई, scribe सब कर draft दे। an ordinance before the next Nyagarbha day that prohibits public art performances. दूसरी We गेम will खेले यार, publicly कैसे बात announce कर it रहा है? later through the Akasha. Understood. दूसरी गेम भी I खेला will कर। inform him when I return. मेरे पास भी एक बंदा है, वेल है वो, मेरे हिसाब से, मेरे नज़रों में। वो भी दूसरी गेम खेलने लगता है जब गेम का कंटेंट खत्म हो जाता है। Go celebrate the birth of that god to your heart's content. आवाज आ रही है ना?
हाँ क्या हाँ हुआ? देखा देखा, इसको बोल रहा था मैं। क्या मैं अभी अभी आया? मेरे को कॉन्सेप्ट समझा भाई, मैं खाना लेके अभी अभी आया। मैं बोला मेरे पास भी एक वेल बंदा है, गेम का कंटेंट खत्म हो जाता है तो समझ लो, वो भी दूसरी गेम खेलने लगता है। भाई लाइव कब लाइव करोगे फैत्मो का? हाँ करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, बस अभी थोड़ा Junior's समझो। शुभदीप भाई देखो, हम The अगर Queen एक गेम Sage रगड़ के ordered खेलने us to लगेंगे stop the तो उस गेम से हम बोर हो जाएंगे, समझ रहे हो? रोज दाल चावल नहीं खा सकते ना यार, It's आज okay. थोड़ा वही रिलैक्स सब कर There's रहे हैं। nothing we can do about it. खेलता तो रिसेंटली गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक कंप्लीट किया। अरे भाई पैसा है बे तुम पे यार, PS5 वाली गेम है ना रैग्नारॉक, क्यों रेडी? यप। भाई पैसा तो है बे तुम पे साले। It truly is unfortunate, but I don't want to cause PS5 trouble for मैंने लिया है, anyone. मैं Didn't कोलकाता से Grand भाग Sage रही हूँ say फिर। that he ठीक है might भाई, investigate? इतना भी खराब नहीं True, था मैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना होता है। कंटेंट खत्म हो जाए तो Okay. नेक्स्ट गेम कोई भी, वही ना। Just जब have to कंटेंट try आए again एंजॉय next करते रहने का, time. गेम खेलने का। यू आर अ गेमर ब्रो, यू आर नॉट अ गेंशिन प्लेयर, The समझ रहे हो? next festival, यप I probably won't be around by then. 100 हो जाता है सब कुछ। छी भाई। Wait, what did you मेरे को just बोला say? क्या? ओके कोई बात नहीं। नहीं तेरे को नहीं बोला, No, nothing. मैं मेरी बात कर रहा हूँ। I'll be heading back to मैं rest. तो रोज दाल Thank you चावल for ही your खाता help, हूँ। अरे यार everyone. सॉरी यार भाई, तुम Can't believe what those थोड़ा यार भाई, hapless सॉरी यार losers भाई, did. पैसे की नहीं, बट जेंशन इज लो, जेंशन तो है। अरे तू बेस्ट है रे, आई नो यार, आई नो यू गाइस लव मी, यस, Did Duniya इसलिए तो मैं टाइम निकल के लाइव करने आया हूँ। वरना मैं सोचा ही था, मैं देखो ना उसको, मैं थॉर को बोला कि यार स्ट्रीम नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं सोचा थोड़ा चिल मारने का, तुम लोग से यार बात करने का मज़ा अलग होता है, मानो ना मानो। मैं वो स्ट्रीम कर लेता हूँ। You still couldn't तो figure क्या हुआ out वो what बोल that रहा तो? deja vu क्या? feeling was all about? वो ऑप्शन बोल रहा था क्या चीज़? आज 1 मिलियन शो करूँगा Maybe डैमेज। it really was because of अरे पागल है क्या? exhaustion. बंटी कहीं का 1 मिलियन। Same here. मुकर जा भाई, That's मुकर why जा। भैया I गेम का stopped नाम क्या है? thinking about जेंशन it इम्पैक्ट है halfway भाई, through the टाइटल में day. लिखा है मैंने। Then how about we settle बहुत in प्यारी and गेम है get भाई, it खेलना भाई fixed? शुभदीप सिंह। Why not Now, Genshin? we Why can chalk Genshin? things up to exhaustion. इट्स नॉट गेंशिन, We इट्स can do जेंशन more इम्पैक्ट। thinking tomorrow. But it's a Genshin Impact. मन नहीं करता गेंशिन बोलने का। अच्छी, जेंशन इज गुड। हाँ तुम चिल करो, हम लोग ड्रिल करेंगे। हाँ ये हुई ना बात। कहाँ ड्रिल करने की बात हो रही है वैसे? हर जगह, जहाँ जहाँ ड्रिल हो कल सके। कल मालूम है हंटू ने दरवाजे, हंटू बोल रहा है, जिन ने दरवाजे के डोर नॉब में ड्रिल कर दिया था। पता नहीं कुछ तो कर रहा था वहाँ पे, टू 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 आवाजें आ रही थी। Continue to monitor for variances in the data and find the cause as soon as possible. आखिरकार इतने बड़े पागल खाने में अकेला कहीं करे अपनी लोनलीनेस मिटाने के Why लिए। does Paimon feel so tired? एक डोर नॉक ही मिला उसे। Anyway, we should go meet Dunyazad right away. कुछ भी गेंशिन इम्पैक्ट ने, गेंशिन को बोला, जेंशन इम्पैक्ट ने ग्राफिक्स का काम तो बहुत सही किया है। ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ, लेकिन अभी मेरे को मन किया बोलने का तो बोल दिया। जहाँ जहाँ ड्रिल होगा वहाँ पे हम ड्रिल करने जाएंगे। अरे 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 अरे, बात तो है। तुम लोग के लिए गेम लैगी तो नहीं है ना यार? कोई एक बार बता देना। यस। Good morning, Dunyazad. Sorry to keep you waiting. Not at all. I arrived early. शायद में जो लोग सब एक बार बता दो कि लैग तो नहीं हो रहा ना? Paimon thinks you sound kinda कम tired. फ्रेम पे चल I'm रहा है तेरा doing गेम। well. There's no कम need to फ्रेम्स पे worry. चल रहा है। Shall we go? कैरेक्टर क्यूट है। हाँ Let's start वो with the stalls. कैरेक्टर से क्यूट है यार। Let's get going. क्या बात कर रहे इसलिए हो? तो गेम में आते हैं लोग। कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये पाइमन है, ये क्यूट है। हाँ पाइमन बहुत क्यूट है, यानी सब एकदम परफेक्ट है। अरे व्हाट, ये तो बोल रहा है लैग हो रहा है, एफपीएस कम है। 60 एफपीएस की गेम है, मैं उससे ज़्यादा कैसे कर लूँ? सर अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को सॉफ्टवेयर्स में काम कर कर के आदत पड़ गई है, तो मेरे को दिख रहा है फ्रेम्स कम हो नो रहे हैं। लैग, नो लैग। ओके ओके ओके। It's all thanks to Miss Dunya's I mean, sponsorship that okay. the children Lag can नहीं है, enjoy frame the कम है। Sub-Zero's festival. फ्रेम्स तो यार टेडी वो स्ट्रीम की वजह से भी कम हो रहे हैं, लेकिन 60 एफपीएस में 60 एफपीएस से बढ़ाने का कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ओबीएस चेक करो। यस, Oh, ओबीएस Are you में interested in 60 एफपीएस Yalda आ रहे हैं। candies? I have some 60 boxes एफपीएस आ of रहे हैं। candy बिट रेट here. कितना है? Pick whichever one you want. बिट रेट 6000 kbps। अच्छा 6000 है ना? हाँ ठीक है, फिर कंटिन्यू कर दो। लैग नहीं हो रहा है। हाँ सही तो चल रहा है, वही ना। वो थोड़ा समझ रहे It's हो, not सॉफ्टवेयर that डेवलपर है यार वो, समझ रहे Each हो, box ग्राफिक डिजाइन पे काम contains a करता है वो। random flavor. It's up to उसको the luck of the draw. बिल्कुल आदत हो गया Flavors 120 एफपीएस include देखने का। lavender melon, hara ये fruit, 200 कर लो, क्या कर लो sunsetia. 200?
समझा नहीं मैं 200 क्या 200 क्या करना है भाई 200 They प्रेम्स all बोल रहा है sound अरे भाई pretty पागल हो रहे हो tasty. क्या 200 कैसे करेगा मियाँ मैं 200 करने का ऑप्शन होना चाहिए था ना And 120 there's also 144 Lizard हर्ट्ज का तो Tail मॉनिटर है and मेरा 200 कैसे करेगा मैं Onikabuto. ये वाली क्वेस्ट अच्छी है एंजॉय What कर were those last two? पता चलेगा तेरे को ओके ओके इसलिए चैट पे भी बात करना होता है आई नो Help me choose. Paimon wants to eat the Sunsetia flavor. No problem. भाई तेरी These चैट boxes of समझदार है भाई candy are numbered समझ 1 to जाएगी 5 from बात left to तो है right. Which one do you want? 1 नहीं नंबर 4 सब नंबर 4 है यार Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed Sunsetia. क्या हो रहा है हम्म अबे 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 अबा अबा जबा अबा जबा ये क्या हो रहा है Ah, Paimon knew he always had incredible luck. एक मिनट ये यहाँ पे कितनी बार आया तू मतलब ये कौन सी बार है Paimon's not really हाँ Ah, ये तेरा सेकंड टाइम है wait. What? He was right about all of तूने them? मिस कर दिया नहीं तो तू यहाँ तक तो मस्त चीज बोलता That couldn't have been luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. iPad Pro ले लो 125 मिलता है उसमें अरे यार क्या बात करो मैं आपका पैसा समझ रहे हो इतनी गरीब यार Mind reading? भैया आपका कौन से क्लास X-ray में है vision? 8 Or some भाई kind मैं of इतना magic छोटा नहीं trick? हूँ यार मैं कॉलेज This वॉलेज is में हूँ यार तुम way लोग too मेरी वॉइस freaky. कोयल कोयल मेरी वॉइस इतनी छोटी लगती है क्या Tell us what's going on. Since when बड़ा है यार did मैं you get superpowers? मेरे को भी लगा Traveler? ठीक है यार भाई Hey, where are you going? What's going on? Did you see something? iPad Pro वो भी Junior एक पर्सनल Zod गेम without के letting लिए her know is वही ना। kinda rude, you know. इतनी गरीब यार पैसा है मेरे पे मैं मानता हूँ इतना भी नहीं है यार मैं इतना छोटा ही यार शुभदीप नो ये वॉइस so क्यूट अरे 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 दिल पिघला रहे हो भाई तुम मेरा नहीं यार वॉइस क्यूट है मैं मानता हूँ इनोसेंट भी हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेकिन समझ रहा हूँ उस कॉलेज में भाई क्या क्लास पूछ रहे हो वही ना तो बात नहीं लॉल 19-20 साल का लगता है वॉइस वही ना मैं 20 साल का ही हूँ यार किसी को देखा नहीं तूने तीर्थ भाई 20 साल का ही हूँ मैं अगली बार से डिस्क्रिप्शन में अपना बायोडाटा डाल के रखेगा मैं इंस्टाग्राम बायो है भैया इंस्टाग्राम अरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का प्रोफाइल डाल के रखा है लिंक सब है वहीं पे देखो यार फॉलो वॉलो करो यार तुम्हारा भाई 550 प्लस फॉलोअर्स है मेरा वॉइस आज मैंने लेकिन यार एक पोस्ट भी डाला है यार मैंने इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो फॉलो वॉलो करो वहाँ पे क्या कर रहे हो तुम मेरा वॉइस भी ऐसी ही है ऐसा लगता है 6 साल में हूँ अरे अरे 6-7 तो बोलो यार मेरे से ज़्यादा क्यूट तो फिर आपकी वॉइस है यार मनीवल भाई सही है लेकिन पहली बार सुन रहा हूँ लेकिन मेरी वॉइस क्यूट है ओह मतलब दूसरी बार है पहली बार किसी और ने बोला था मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था लेकिन ठीक है हम मेरे साथ मास्टर्स कंप्लीट कर लेंगे फुल काइंड ओल्ड अरे 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 बड़े मियाँ बड़े तो हैं भाई आप मतलब तेरे को भरोसा है क्या किस बात पे तेरे खुद पे भी तेरे को तेरी आवाज अच्छी नहीं है तू मानता है नहीं आवाज़ तो अच्छी है मेरी ऐसे कोई टैलेंट तो है मेरे में हिडन टैलेंट है शक्ल अच्छी नहीं है शक्ल अच्छी नहीं है सही बात आज मास्क पहनने इंस्टा में फोटो डाला अनुज ने मस्त पिक था रे लेकिन हाँ यार देखा मैंने अच्छा पिक था मैंने ही डाला था क्योंकि खुद की तारीफ ही कर रहा है देख लो खुद की तारीफ करना चाहिए भाई दूसरा नहीं मिलता क्योंकि तारीफ ओ नाहिदा है क्या ये वाह अभी तक क्या देख रहा था 3-4 बार दिख गई भैया आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है मैं ही हूँ यार शर्मा जाऊंगा मैं अभी इतनी तारीफ करके खुद को Look, that's... Isn't that Duniya's head? What's happening here? Why are स्टोरी there मस्त है two सो Duniya's रिलेटेबल heads? नाइस सर मेरा फेवरेट यूट्यूबर मैं ही हूँ वरना मेरी पूरी गैंग है टेडी पो ये You सब मेरे already फेवरेट know यूट्यूबर्स that हैं this isn't your first Yes, bro. Sub-Zero's festival, don't you?
फिनिक्स भाई हैं, वो भी हैं, जो मेरे दोस्त हैं, सब मेरे फेवरेट यूट्यूबर I'm हैं। sure you already know how to use this. दैट्स नाइस थिंग, बट मैं प्रॉपर यूट्यूबर नहीं है, आई एम जस्ट अब खुद से शादी भी कर लो। अरे यार ऐसा नहीं करो यार, लड़की नहीं मिलेगा तो शादी कैसे करेगा मैं? Where did you get it? What's inside? खुद से बोल रहा है You इसको should तो। use it too, Paimon. You know Paimon? ये Guys, चाहिए जेरी, 2 मिनट नॉलेज दो, कैप्सूल। Well, 2 मिनट दो। ये बस मेरे को अच्छा सीन लग रहा है, देख लें दो एक बार। आई नो तुम लोग बहुत सपोर्ट हो, बस 2 मिनट देना। what the? This is our 20th time at the Sub-Zero's festival? Huh? No. मैं खुद से शादी नहीं करेगा मैं। 40th? Just how many times have Me we been male. to the Sub-Zero's I need festival? female. Yes. Have we been trapped in a single day? मैं आपका If it फेवरेट weren't गेम, for मेरा you, फेवरेट गेम अभी के लिए we wouldn't फास्मोफोबिया have है। even realized. What the heck was inside that knowledge capsule? फास्मोफोबिया इज माय फेवरेट गेम फॉर नाउ, अभी के लिए, सिंस मैं हूँ। Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real हर catalyst for फेवरेट restoring गेम और our हर memories. फेवरेट And the इंसान का टाइम knowledge होता है ना, capsule was just your means of showing You बदल need our जाता है yourself. बाय टाइम। way. देखो everyone need themselves for holding them, What about everyone else? but you know Why are you only helping the sometimes two you of need us? opposite gender. I don't wanna elaborate everything else, but yes, Your you sense need of deja vu is opposite stronger gender. than Yes bro, everyone else's, yes? तो अनुज मैं कुछ बोल Ask दूंगा, for an opposite gender। explanation. क्या? ये चुप बैठ भाई It तू was as if बहुत a बोलता है। single sheet of paper मेरा कब GTA तक फिर हाँ separated ठीक है those यार वो भी। memories from your कब तक फिर consciousness. वही करते रहोगे? क्या? योरसेल्फ, A familiar question. I प्लेइंग think विद this is the योरसेल्फ। 7th अरे यार time you चुप बैठ asked भाई तू। that. As you can see, Never she mind. isn't भाई doing I have well. been played multiple probably times, you know, sensed it you know, too. you know, if you know bro। The Dunyarzad you were just with is different from that first काट के चली जाती हैं भाई Dunyarzad लड़कियां is भाई, in क्या front of you करेंगे right यार। now, and That's why she we doesn't go have to a lot of gym. time Yes, left. हम जिम नहीं जाते, हम जिम जाते हैं। Looks like We you're gym almost done rat. sorting out your फिर brain. इसके जैसे लोगों ने बना दिया भाई डायलॉग, Oh yeah, डायरेक्ट जिम I'm करे। Nahida. ए भाई मैं नहीं बनाया। किडो भी है 8th 9th और कितने बिचेस नहीं मिलते यार। ग्रेजुएशन करके देखो, घर वाले शादी करने के लिए पागल कर देते। अरे भाई यार, you know my You feelings passed the bro। test. वो कौन पागल कर रहा है बे? कहते हैं बिचेस नहीं मिलते। अरे और Happening. You can awaken our memories. भाई तुझे पता है and you डेरेथ, seem मेरे like घर you वाले know भी what's बोलते हैं going भाई, on. लिटरली बोल रहे हैं इस वक्त। Wait, बस 2-3 everything in साल this और, world 2-3 साल runs और, in a loop. ऐसे करके ताने This मारते हैं भाई। cycle is called a samsara. You 2-3 साल ask बस for हो the जाए, truth. 1 साल की जॉब, That's on फिर you तेरी to शादी find करा out. देंगे। अबे क्यों कराओगे यार? If you were told हमारी I कोई can feeling only नहीं है? give you surface level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last काउंटडाउन कर रहा है feathers. मॉम डैड। अरे मॉम नहीं है मेरे, You sure शी love to use एक्सपायर्ड weird इन analogies. 2020। मेरे सिर्फ डैड है। यस, डैड ही ताने मारते हैं। मेरे डैड बहुत Analogies are फ्रेंडली है मेरे wonderful से, tools. हमारा बेस्ट फ्रेंड वाला They let you रिलेशनशिप है। use existing knowledge to बिल्कुल understand मस्त, भाई की जैसे unfamiliar रहते हैं हम लोग। things. Okay, so with what you know so वही far, सपोर्ट करते हैं सब what चीज़ों do के you लिए। think the truth is? We've already experienced the Sub-Zero's festival many times. That should be it. ओके बाय भैया, मेरे को जाना time is है मम्मा के घर। endlessly ओके cycling लास्ट within one एग्जाम था। single ओके बाय, day. प्लीज शॉर्ट दे दो। शुभदीप सिंह शॉर्ट दे दो। वही ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। चिल ब्रदर यार, सब बढ़िया सब बढ़िया। A time loop. आपके डैड को फिर रिस्पेक्ट प्लस प्लस। अरे यार मेरे से पूछो, भाई, मैं रात सबको दिन से भाई। रिस्पेक्ट करता हूँ उनको भाई। Paimon, a
A simple time loop can't Respect explain to some of the dad. phenomena. सबके मोमेंट Respect डैड to को कर Teddy. देते We're still missing Especially- a lot of हैं information. He's been like with me for Unfortunately, I last can't 4 give you years, any more hints. holding my ups and downs. Yes. Dad, giga chat फिर. अरे yes bro. Dunyarzad. मस्त है यार, लेकिन जो भी चल रहा है मेरी लाइफ में, I'm enjoying that. I have no That issues. doesn't mean we can waste an infinite amount of Life them. is all about accepting Hurry things, I and guess. find the truth before today's festival ends. Acceptance आ गया तो सब सही है. बस देख वो पाइमन जैसा बन जाए। Let's think about our current टेडी भी लाइक situation. पीछे से चुप हो जा भाई, To save शांति से Dunyarzad, गेम we खेल. have to escape the वही। samsara of the Samsaru's festival. And to do that, चोमू we इंसान need to I am figure out what's happening. The truth. Nahida rejected the idea of a time loop, so we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more चले productive than sitting here and रिलेशन भी scratching सही है. our हाँ heads. यार, अनुज महेश्वरी. अरे यार Why कुछ don't नहीं कर we सकता भाई मैं. start It's just with you know, Those if you have stars. been through a lot, you have a lot of experience to share with multiple persons. Yeah. मैं 10-20 मिनट्स बाद आ रही हूँ, थोड़ा सस्ता नशा करने जाना है. ठीक है एंजॉय ब्रदर. सस्ता नशा कर लो. सैनिटाइजर फूक के आएगी लड़की. अरे महेश्वरी वाला सीन बस यही है ना. मैं समझ रहा हूँ तुम लोग क्यों कहना चाह रहे हो, बट ठीक है यार, समझ रहा हूँ. आता है यार वो. इफ़ यू हैव फेस अ लॉट ना, वो अपने आप एक दिमाग में बैठ जाता है कि अगर बात उठती है तो यू नीड टू शेयर योर एक्सपीरियंस. एंड तुमको भी सीखना चाहिए यार ये चीज़. अगर यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस एंड इमोशंस ना, इट्स गुड फॉर यू. अनुज में ठीक है भाई I mean हर कोई होता है Hey, it's you guys again. इट्स गुड. Where's your cultured friend? तेरी मत फूकना. अरे Feeling a little नहीं फूकती unwell. यार, वो कुछ भी नहीं करती. सैनिटाइजर फूक के आ जाएगी बस. सूंघ के आ जाएगी. Did you come back Best to nation buy उसके वही होंगे. something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly पाइमन को वो शार्प yesterday? वॉइस है यार. Did you कुत्ता भी है, लेकिन actually cute come भी back लगता from है. the forest yesterday? What kind of philosophical वही तो. nonsense is this? चुपता भी Are है you लेकिन two पसंद भी है daydreaming? गुड नाइट के नशा. अरे भाई Didn't you know that ये no सब क्या one मनीवल भाई, ये dreams सब in कहाँ से ला रहे हो? Sumeru? Go somewhere मेरा एक else if छोटा you भाई वो want to find हार्पिक के नशे someone to बोलता है, daydream मालूम है? with. बताओ ऐसे तो नशे बना रहे हैं अपन. He actually has a point. Is this a dream? Is everyone True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. Let's keep asking around. Oh, it's you two. Was my divination मैं तो so बस पेट्रोल का accurate नशा that you करता हूँ. felt अरे compelled to compliment me in अच्छे person? नशे होते हैं भाई, मानो ना मानो पेट्रोल के नशे अच्छे होते हैं भाई. सूंघने में मजा आता है पेट्रोल. चलो इवेंट हम भी थोड़ा काम करके आते हैं. ओके ब्रो, सी यू इन द चैट. Ooh, I knew See you it. later. I told you. The god's divination is highly... You're really excited about this, huh? That's भाई एक exactly why नई we नई came रबर, back. नई Help us कॉपी, better एक पेट्रोल के नशे understand it. सबने किए हैं भाई. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? Huh? Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? Paimon knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous.
I believe you. Recall the interpretation of your divination, the moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does sound like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. So that's how it is. Looks like fortune telling is just fortune Jerry? telling. It's no good for practical problems. फिर कुछ नहीं. पाइमोन अपने आप को पाइमोन ही बोलती है. अरे पाइमोन बहुत प्रेस्टिजियस है भाई, बहुत क्यूट है ना, उसको घमंड है उस बात का, मैं बता रहा हूँ. We haven't made any progress. Who else हर can we किसी को talk होता है. to? पाइमोन होने का घमंड सही है भाई. नहीं, खूबसूरत होने का We घमंड. tried talking मैं to नहीं her हूँ a couple खूबसूरत, of मेरे को times, घमंड नहीं है. but she always thinks we're तेरी playing बात कौन pranks कर रहा है? on her. क्या भाई, You खुद ही think करता है she'll brush लड़का us भाई, off मैं केस again? करूँगा तेरे पे. Yeah. If we tap into at this time of day, Dia's probably just finished इस पे एफआईआर दर्ज भी नहीं होती. कर ले. क्या भाई सॉरी, एक बार फक ऑफ बोलियो. रेडी? आवाज नहीं आ रही, बोलियो एक बार. I'm Fuck you. fine, my lady. It's just a बस scratch. मैं जा रहा हूँ केस करने गाइस, स्ट्रीम से क्लिप उठा लूंगा मैं. perfect timing. Both of you are here. तो स्ट्रीम से ये भी I'm a उठा सकता है traveler. और इससे You पहले came वाला at भी उठा just the सकता right हूँ मैं. time. टेडी रोस्ट Listen, कर रहे हो? there was अरे a यार टेडी dangerous रोस्ट ही तो करता है. Huh? बड़ा You बंदा है saw? टेडी. Then टेडी why रोस्ट didn't करता है you फिर jump अपना in अकाउंट हैक earlier? करवा लेता है. If someone was protecting Yes. Miss Dunyarzad, I could have went all out. जिसको नहीं पता यार, टेडी का एक अकाउंट हैक हो गया Anyway, यूट्यूब can से. you do something for टेडी me? आल्सो यूट्यूब करता हो है गया टेडी. लेकिन. ये हो गया, रिकवर हो गया, लेकिन We ठीक want है. the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? How did you know what I was वो going to जो say? डोटा 2 खेलता है भाई, तुम संभालो भाई, अपनी We need to कम्युनिटी say संभालो something भाई. convincing. भाई डोटा 2 वाला इसका अकाउंट हैक कर रहा है भाई कोई. मेरे Dia अगली एक sold her गेम का भाई greatsword to पैसा लूट raise लिया extra उसने, funds. जिसकी मेरे को स्ट्रीम करनी थी हाँ यार, जेरी वगैरह के साथ. क्या ही बोला. I Stay didn't tell secure, भाई. anyone about that, including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. All right, so this is the situation. वैसे हुआ वहीं से है, पता है जेरी. कहाँ से? It's kind of hard to believe what you just told me. मेन जो चीज थी First, ना let वहीं me से. make something clear. अभी Most ये of us सब क्या desert था, dwellers सब might आपस में not be the कनेक्टेड था, salary राइट. type, पैसे मिल गए कि नहीं but we मिले? do have big. She's नहीं, कहाँ से? quieter than पैसे usual. से चल गए टेडी. Uninterested in anything and हैशटैग एंड में कौन है आपके gloomy. साथ वीसी में? हैशटैग एंड कौन है? रुक, कल्याण. कल्याण. हैशटैग एंड मी. अच्छा है, हैशटैग एंड मी. कल्याण है यार, कल्याण हमारा बंदा है, साथ का बंदा है. Yeah, लूट बैठता she रहता है, पागल है वो, isn't the पता same नहीं as क्यों. before, but माइकल बे, her parents said Eh, that this is how I she was call- like at first. गेंशिन खेल रहा है. at first, I टेंशन don't चल रहा है quite वो भी. understand what you're all talking about. I'll go rest on the नहीं, bench ये देखो over ये there. साइड पे आ गया. जनता मांग रही है भाई, तेरी My वॉइस सुनना lady, चाहती है. are you angry? All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I Nahida. told you that it won't help to bring anyone here. नहीं दे. भाई छोटी सी है वो. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. तो मैं तेरे भाई ठीक है भाई, ये
The real छी भाई Dunyazad? Where and गंदा who are you talking to? Huh? What? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyarzad here. भाई नाइदा को सिर्फ हम देख सकते हैं लॉल, यस और दुनिया साइड को भी सिर्फ हम देख सकते हैं भाई साहब। हाँ पूरा अभी तो झमेला तुझे पता चलेगा Hold on. देखता जा Over there. Is that? Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. Do you believe us now? The Sub-Zero's festival has been repeating itself. So, you think the sages are behind this? Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sub-Zero's festival as a sick joke. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia's sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. Maybe there's more to the Akasha than we know. Right! Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha! The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the यार मैं चुप entire हो जाऊँ तो समझ populace's जाना यार, मैं wisdom? थोड़ा एंजॉय कर रहा How हूँ does that स्टोरी, work? समझ रहे हो? मैं समझ सकता हूँ तुम लोग बोलोगे बोर कर रहा है अनुज, लेकिन यार स्टिल स्टोरी बहुत इतना इंटरेस्टिंग है कि घुस जाता हूँ मैं बीच बीच में, तो समझ जाना। Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? Oh yeah. आवाज आ रही थी ना That मेरी? हाँ आ sounds रही थी about मेरी। right. What do you think? Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. I need to carefully think things through. My mind feels exhausted, even though I haven't done too. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. When the desert dwellers set off on their quest for knowledge, a sage once said, "Knowledge always comes at a price." Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack.
An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Yeah, I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words, when this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. How does everyone feel? Huh? What is it? Oh, that! Paimon knows what you're talking about. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. Traveler, did you hear that? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. But we cannot lose all of our progress. बाय 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 कोई मिशंस तो हैं यार Paimon remembers everything! Good. You adapted quickly this time. We definitely took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. I guess I'm the moon. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clues. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's... Ah, there you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Dia? What's wrong? Why are you both gawking at me like that? You didn't get hurt this time. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Dunyarzad. So Dia's lost her memories after all. Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so... It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of muscle battle memory won't is get you all about your anywhere. thing. ठीक है? Muscle memory is important, my friends. Traveler, Use it. what do you think? Yeah, Paimon's feeling really hopeful.
I have no clue what you two are talking about, but it's still dangerous here, so... So you want us to take Dunyarzad somewhere else to Ready? rest, Next while banner you किसका आ check रहा if है? there are still... How did you know what I was gonna नेक्स्ट आ रहा है say? स्कारा मुझेगा Can you read minds? कौन है ये? Forget हार्बिंजर it. Go and do your thing. पढ़ती है? हाँ हाँ तू गेम प्ले देख लेना हवा में उड़ सकता हो खा लेंगे गाइस फिर हम वो. Whew. It's finally nighttime. Aside from Dia not getting injured, everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnappers. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? Really? Good job on all that progress. इतनी देर स्ट्रीम देख के Get some ये good बात sleep समझ गया tonight. कि ये बहुत पीसफुल गेम है. हाँ यार भाई मनीवल भाई पीसफुल गेम ही है. What kind of an answer is बहुत that? पीस है. एंजॉय कर सकते हो. काम गेम है. Tomorrow शांति will से देखो come. एंजॉय करो. Everyone assumes this is common इसके अलावा कुछ knowledge. काम नहीं है इस But the गेम में. only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? इतनी देर से मैं भी देख रहा हूँ ना मनीवल भाई. मैं एक चीज़ बता सकता है. मैं बहुत इंटू हो गया था इस चीज़ के. 5-10 मिनट के लिए वो घुस गया था और भूल गया था चैट है. वो तो एकदम से ब्लिंक हुआ था चैट तुम्हारा तो मैं पढ़ पाया उस चीज़ को. वरना तो भूल गया था भाई कि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ. It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sub-Zero's festival. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. Huh? Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? Huh? People always say they feel a sense of relief after they take a duk-duk. That's why I suggested you could try that. Is that so strange? It's so strange and so against common sense that Paimon's at a loss for पाइमन words. ब्रेथ है शट डाउन. You were हमेशा sounding अगर उसको kinda खाना दे smart दो just a शट minute डाउन ago. अपना स्विच ऑन हो जाएगा वरना स्विच ऑफ ही रहता है. उसे खाना दे दो. खाने के टाइम पे स्विच ऑन रहता है उसका Even दिमाग though बस. it's happy and lively at the Sub-Zero's festival every day, Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. we're still in the same day. भाई क्या हो क्या रहा है? एक ही You दिन में घूम already रहे हैं हम knew लोग लूप last के night that रेडी. we didn't break out of the Samsara. Why didn't you tell us? Would there have been a point? You It's would a have spent dark the night with new secret worries, about the with Sumeru tomorrow city. still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come. Paimon thought the Duke did that! Oh, whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. जेलस है What भाई. I mean पाइमन is, बहुत जेलसी even है though I भाई. had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? Nahida's talking about confusing stuff again. लॉल. Anyway, that's enough chit-chat. So, Traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? Huh? Why are you scrapping your previous theory? Oh, yeah! You're right! Gosh, how did we not know? So, what's your new hypothesis?
The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it. That doesn't sound right. I need to carefully... Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the... That doesn't sound भाई यही right. तो होना चाहिए था यार. I need to carefully think things through. Bodily memory. Oh हाँ, bodily memory जिसने ये भी Okay, कहा. Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation... Okay, Nahida said the Akasha... Mercenaries rely heavily on muscle यही था, memory, ठीक है? and Dia was able to use her experience... I can't seem to cohesively... काशा साउंड क्या होगा क्या ये? ओके. If all our memories of a day are erased at the end of that day, then we would unwittingly relive the same day again and again. Oh! Then the beep we hear every night could just be indicating the deletion of our memories! That's why when we wake up, everyone thinks the Sub-Zero's festival hasn't happened yet! It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before! But muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense! बत्ती जल गई गाइस पाइमोन की. Enjoy. A brilliant deduction. भेजी थी. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. थोड़ा पढ़ना है, चलता हूँ. ठीक है ब्रो, पढ़ाई वढ़ाई करो यार, क्या कर रहे हो? प्रीमियम तो देखते रहोगे, पढ़ाई वढ़ाई करो यार, वो इम्पोर्टेंट है. That isn't simple at all! Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right! She did help us find our latest clue after all. Let's go! पढ़ाई वढ़ा करो यार गाइस, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, मानो ना मानो, बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ाई. Next on the agenda. तुम्हारे भाई ने इंटर्नशिप फोड़ी भाई पढ़ाई के दम पे. समझ लो, पढ़ाई करो भाई. Next on the agenda. यार मैं अपन Next on the agenda. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt today. Get hurt? Why would I? Well, you're still getting used to your new grade. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... Traveler, could you explain the situation to her today? Paimon's... Oh, that works! What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some... Don't think too hard about it. Just take what we're saying at... All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being a... Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sub-Zero's festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's... Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and it's not very likely, but it's also not impossible.
No, it is impossible. I've got proof. You have proof? Where? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little longer. Come with me, Miss Dunyarzad. Please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. This is it. Huh? This is a wooden training dummy. See those marks on the dummy? Those are the result of several days' worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? Then the sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. It's just as they say, each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be Is it really impossible? What if they used some fancy machine to carve every single mark? People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. The same thing applies here. At a mere glance, I can differentiate carved marks from the results of combat training. Whew, I hope that cleared things up for you. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. Well, back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. Yep, that's true. So, strange? Paimon, huh? Leaving Hello? the city? You're right! मेरे को तो लग गया It's सो ही really गया तो strange how we never देख रहा हूँ thought यार। of such a simple solution. Many देखो things देखो should become clear if we can. Paimon can't believe it. Did we miss this because we're tunnel visioning This is too me hard playing on our Genshin, other bro. theories? Or because इसलिए मैं we're टेंशन just निकलता हूँ, too बहुत शांत हो tired? जाता हूँ मैं। How about we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. क्योंकि आपको हर एक डायलॉग पढ़ना पड़ता है या फिर सुनना पड़ता है एंड यू नीड टू फोकस, समझ रहे हो? नीड टू एंजॉय दिस गेम, से थोड़ा बस वो करके चलना पड़ता है। बात कर ले भाई, नहीं इधर से। Nahida, we're back! You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time... leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. But you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kind of strange. In theory, I should have already awakened all your memories. Yep.
Something here's definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. Ready? हाँ क्या कर रहे हो? मैं से अभी विश कर रहे हो? यप यप मतलब फ्री हो गए हो? क्या काम है? चलते हैं वही भूतिया दुनिया में. About that. अच्छा Traveler, वैसा aside from your memories, listen to it and you'll क्यों understand. तो Go इधर से back. There are countless मैं spaces here. मतलब मैं Our कर लूंगा मैं Sub-Zero's 12 3 festival पे in हूँ Sumeru अगर City लीव is किया तो just प्रोग्रेस one चली of them. जाएगी. टिक टिक करके मेरे को बता देना. Traveler, तब तक मैं you कर ही रहा हूँ should be स्टोरी. missing 2 days worth of memories. गाइस जो हैं चैट में I'm हम on जा रहे हैं affiliate. फैथोमोफोबिया 5-10 मिनट में. 15-20 मिनट भी हो सकते हैं. टेडी पे डिपेंड करता है वो कब अभी इसका खत्म कर रहा है. It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just... I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stuck. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. It looks like he really doesn't know. इसको खुद भी नहीं पता है वो काम भी कर रहा है समझ रहे हो. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. क्या? This is a good spot. अरे वो And the सोल्जर guard hasn't noticed us at ना all. किसी को आने दे रहा ना किसी को जाने दे रहा है उसको भी नहीं पता करना क्या है. Why? Are you going to leave Paimon behind? But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon. Okay. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. And please. पैमोन के बिना गाइस पहली बार. क्या? पैमोन के बिना भी हम कहीं जा सकते हैं क्या लॉल. Traveler! Paimon would never see you again! You just did Paimon waited for you for hours and hours at the city wall! ओ भाई ये तो बहुत इमोशनल है अपन को लेके. You promised Paimon that you were only अच्छा वो वाला सीन आ गया क्या रो रही है? हाँ. Paimon, calm down. He's Yes. here now. I बताओ. don't think he understood what you were saying. Paimon तुम ही doesn't कभी care. पाइमोन को समझ नहीं पाए. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, अबे चल क्या रहा can है? you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. After that, you left the city.
Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city. Those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? It really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. Something like a message? But don't look at me like that. I'm not used to being stared at. नायदा की फट गई. Well, okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. I'm done. Here you go. What? Isn't this just an Akasha terminal? I made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message. Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the in. Let's go then. Let's expose those sages. All right. Okay. See you tomorrow, traveler. That covers everything that's happened so far. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the messages together. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sub-Zeru's festival in Sumeru City is just one of them. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights. All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside, but everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. There's another part here. We only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. देखो guys, एक तरफ तारे एक तरफ नहीं है. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? Probably because yesterday just happened to end at that moment. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message.
It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final space has also disappeared. Traveler, what do you think that final space could have been? Was that space actually the real world? But that doesn't sound right. All the bizarre spaces. That doesn't sound right. My impression is that. Oh, so that's what it is! After the sound of the beep, the final space, the Sub-Zero's festival, also disappears. And later on, Traveler also mentioned a bunch of new spaces materializing behind them. Paimon's head is spinning. Just what are these spaces anyhow? Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, added so no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? Hey, where are you going? रेडी हाँ कितना हो गया लास्ट फ्लोर भाई 33 Do you want some बोर हो alone गए तुम time लोग to think? Alright then, Paimon won't disturb you. The dance of Sub-Zeros is about to begin. I'm going to go watch it. Okay. Okay then. See you later. Have you figured it out yet, Traveler? Awesome! What is it? Paimon wants to know. Oh, wait. You're back! I've been waiting forever for you two. Judging by... Are you ready to take your Sub-Zero's exam and graduate from the festival? Okay. We've already experienced the Sub-Zero. That doesn't sound right. People in Sumeru don't dream. Hello? एक सेकंड साला कुत्ता यही है मैं स्टार्टिंग से व्हाट I can't seem to.
I can't seem to cohese. I. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common. Those spaces remind me of. That doesn't sound right. Okay, Nahida said the Akasha relies on the. That doesn't sound right. The moon, illusions, and lies. That doesn't sound Wait, right. ये क्या हो रहा है? क्या तेरे को सही उसमें करना है सीक्वेंस में और मैं भूल चुका हूँ 1 मिनट कॉल We है are all in a dream. It isn't that. मिल People गया in भाई. Sumeru think they don't टेस्ट ऐसे dream. कर लिया भाई. But the truth is, the Akasha steals their dreams without them knowing it. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they... Huh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? And it grants knowledge to the people. That doesn't sound right. It compiles the wisdom of the entire populace. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate. That doesn't sound right. That doesn't sound right. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams, too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom? Isn't there anything more to it than that? Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles. So in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukut. The real story is that the sages from the Academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about this? The Grand Sage said, "Go That doesn't sound right. We've already experienced this. That doesn't sound right. Those spaces kept disappearing before my eyes. Those dreamscapes kept vanishing. I... Correct. The Akasha, their disembodied consciousness, is placed inside the collective dream of the Sub-Zero's festival. No one is any the wiser as another people wake up to yet another dream about the Sub-Zero's festival. So, this is like a dream factory. And very good, Paimon. Guys, बस 5 मिनट बाद हम फार्म में जा रहे हैं. बस 5 मिनट. बस फार्म में. टेडी जैसे आते हम जाएंगे. हाँ मैं आ गया हूँ. आ गया क्या? Okay. ठीक है, बस ये कट खत्म होने दो. एंड बस थोड़ा-थोड़ा करके टेंशन, थोड़ा-थोड़ा करके फार्म में खेलेंगे अब से. Taking off our terminals in this एकदम से पूरी dream गेम नहीं doesn't होती do यार. anything. All right, last question. Who am I? They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation.
So then, if Nahida has referred to her... So you noticed. I thought that one would be the hardest question. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all Guys, हमने over the निकाल लिया place लॉर्ड for info कुसनाली about कौन है, देख Lesser लिया Lord Kusanali. देख लिया पता ही नहीं था, लेकिन हमने पता लगा You लिया. like this. टफ नहीं था हमारे लिए. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about... Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. After we end the Sub-Zero's festival Samsara, we have to look into them. How can the sages of the Academia do this behind their Archon's back? In the end, I'm just the moon. The real sun is Long Khan. A sun and a moon? Oh, we're out of time today! I'll tell you how to break free of the Samsara tomorrow. गाइस लो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है. टेंशन हमारा अभी के लिए यहीं खत्म होता है. बस ये कटसीन खत्म हो तो क्या नाहिदा की भी याद चलेगी क्या? व्हाट द फक, क्या बात कर रहे हो? Hey, what's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way! The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. Paimon can't believe it. ओ डूनी साइड खत्म हो गई क्या? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream. अरे So यार another Dunyarzad sad appeared bro. to replace her in the dream. Just like the grass Yeah. and the trees. But Dunyarzad. personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just... speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad बुरा truly लगा believed bro. that she met you within her consciousness. And it was you who inspired her. So you do पूरी बात तो remember समझ her फिर after बुरा all. लग. पपेट थी, समझ गया हूँ, लेकिन स्टिल ओल्ड डूनियरसाइड तो ओल्ड ही है ना ब्रो. वो भी तो पपेट की जैसी ही होती, वो भी तो अभी तक वैसी ही रहती है ना भाई. Her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. But even so, she's still far from it. I'm still a Oh, ऐसा long था way क्या? off from being a क्या real भाई? Archon. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sub-Zero's festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault. Nahida. And theirs alone. Nahida. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the Samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sub-Zero's festival dream is under the Akasha's control, that means this dream belongs to... Huh? So, well, which means... Imagination? Imagination means breaking through what you perceive as norm, like when a server at attack... However, if you're the dream will respond in kind. But right now, our host is unaware that this is a dream.
No matter how many, find some way to make that person. How are we going to find them, though? And even if we did find them, after all, like you said... It's extremely difficult. As for me, Out of town? yes. Narian go. She I was can such hear a good that. person. करना है क्योंकि मेरे को अभी के लिए बंद. Yeah. Saving but we mustn't lose hope, Yeah, Traveler. बस करते हैं अभी के लिए Duniya जाना है मेरे would को. definitely want to see us save everyone else. So Paimon's wondering, do you think the बहुत लंबी बात करते हैं ये लोग भाई. Huh. So, कसम से बहुत लंबी बात who do करते you हैं. think the host of the dream is? Oh, that would make sense. Let's go ask him some questions, shall we? बस करो भाई, अभी के लिए बस करो भाई, इतनी बात करोगे. हाँ, थैंक यू फॉर प्रीमोस. वी विल कम टुमारो. गाइस अभी के लिए बस इतना ही. मैं नई स्ट्रीम चालू करूँगा बस फैज़मो की. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं हम. बाय बाय. बुई 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 गाइस बुई. मिलते हैं फैज़मो में 5-10 मिनट से स्टार्ट करूँगा स्ट्रीम. या बुई बुई.